Good evening, everyone. Today is the session number 1 from the chapter of work, power, and energy, and this is an introductory session in which I will be discussing in brief about this work, power, and energy. So, मैंने यहाँ पे board पे first thing is that I have written the definition of the work. So, work is said to be done when a body is displaced in the direction of a force. मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है. यहाँ पर एक ये body है which is lying on a horizontal surface. Now, if I apply a force, let us say I am applying a force at its geometric center at an angle theta with the horizontal. ये angle theta है. This is the force F which is acting on this body, and so the horizontal component of this force will be equal to, that is, it will be equal to F cos theta. और इसका जो vertical component क्या हो जाएगा? This will be equal to F sin theta. ठीक है. Now, if this body is displaced in this horizontal direction, then the work done will be equal to the magnitude of the force in the horizontal direction, which is equal to F cos theta, multiplied by the displacement of the body, where D क्या है? D is the displacement of the body. So the work done will be equal to FD cos theta. ठीक है. This is a very simple definition of how we calculate the work done, and the work is said to be done when a body is displaced in the direction of the force. अब ये जो है, अभी इस केस में हमने एक force लगाया है which is applied at the geometric center of this body. And it is applied at angle theta with the horizontal. So ये जो F cos theta है, that is horizontal, जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डायरेक्शन का जो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, और वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन दैट कंपोनेंट ऑफ द फोर्स which is along the direction of the displacement. So यहाँ पर जो है, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, that is along this horizontal surface, then F cos theta जो है, this is the component of the force which is acting along the horizontal direction. So F cos theta into the displacement along this horizontal direction will be equal to the magnitude of the work done. ठीक है. And now work done का जो unit होता है which is equal to, that is SI unit. The SI unit of work done is joule, which is denoted by J. ठीक है. And 1 joule is equal to 1 Newton meter. ठीक है. अच्छा, वर्क जो है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. The SI unit of work is joule, and 1 joule is equal to 1 Newton meter. And so this is in short about the definition of the work. Now let's move on to power. Power is the rate of doing work. ठीक है. रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसमें इंपॉर्टेंट है एक दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवरेज पावर. So average power is defined as the work done divided by the time interval.
ठीक है। सेकेंड थिंग आता है इसमें पावर में, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस पावर। सो instantaneous power is given by dw upon dt। so ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नाउ दिस वर्क डन हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि दैट इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एफ इंटू डी, दैट इज द मैग्नीट्यूड और दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज F, let us say ds upon dt, where s, this ds upon dt is the rate of change of displacement, and so instantaneous power can also be written as F into V. So this is an important formula, instantaneous. So instantaneous power is also given by F into V. Now power जो है, power का unit the SI unit of power is watt, ठीक है, and 1 watt, जिसको हम watt को हम ऐसे लिखते हैं, आपका that is W हो जाएगा, जिस कैन बी रिटन एज 1 W, और 1 watt is equal to 1 joule 1 joule per second, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर है, पावर जो है इसकी यूनिट हो जाती है आपकी वॉट, एंड वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। नाउ सो यहाँ पर पावर में जो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी होता है। एवरेज पावर इज गिवन बाय वर्क डन डिवाइड बाय दिस टाइम, एंड व्हाट इज पावर, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो दैट इज इक्वल टू, दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस पावर ये हो गया, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू वी, एंड द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, एंड 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब हम आते हैं एनर्जी के ऊपर। एनर्जी की अगर हम छोटी सी कोई डेफिनेशन लिखेंगे, सो वी कैन राइट दैन इट इज द एबिलिटी of a body to do the work, ठीक है। एंड एनर्जी जो है, दे वी एनकाउंटर द एनर्जी इन मेनी फॉर्म्स। सो अगर हम see today I am just discussing about these three topics in a very concise manner, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस ही जो है आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस वर्क, पावर एंड एनर्जी इन डिटेल इन द कमिंग सेशंस। So today I am just giving you the definition of work, power and energy in a very concise manner। छोटी छोटी डेफिनेशन दे रहा हूँ, उनका डेफिनेशन के साथ में उनका क्या मीन्स, फॉर एग्जांपल जैसे वर्क है, देन वर्क का क्या फॉर्मूला है, पावर के बारे में अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें मैंने आपको इंस्टेंटेनियस पावर या एवरेज जो पावर है उसका फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बताया है, उसके एसआई यूनिट्स के बारे में बता दिया है, ठीक है, उनकी यूनिट्स के बारे में बताया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन डिटेल, दैट इज वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में जो डिटेल का जो मैं डिस्कस करूंगा इन द कमिंग सेशन। दैट ये तो सेशन 1 में जस्ट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन
on work, power and energy. That is only I will be discussing only the definitions. So energy क्या है? It is the ability of a body to do the work. Energy कई form में हम देखते हैं, that is kinetic energy होती है. We see the potential energy. The kinetic energy means a body can have the energy stored in it in the form of this kinetic energy, potential energy. Then there is a gravitational potential energy. Gravitational potential energy है. Then electric potential energy है. स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. And so there are so energy is encountered by us in many forms. ठीक है ना. आपका एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है. सो there are many forms of this energy. And for example this kinetic energy का जो फॉर्मूला होता है that is given by a half mv square. इसी प्रकार से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये होती है आपकी mgh. ठीक है, एवरीबडी नोज अबाउट इट. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? g m1 m2 बाई r होता है, माइनस साइन के साथ में. देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो ये हो जाती है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R. ठीक है. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग. So these are the different formulas which you will be using in the which we will be using in the coming sessions also. So ये एक बस एक शॉर्ट में आपको मैंने बताया कि what are the different forms of energy which is normally encountered by us. And इसके अलावा जो है इसमें मैं आपको और there is not a lot of yeah, for example. अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर मैं let us discuss something about this kinetic energy. तो kinetic energy जो है it is given by half mv square. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें या हम लिख सकते हैं m square v square डिवाइड बाई m. What I have done is I have just multiplied this numerator by m and then I have written m in the denominator. तो एक ही बात हो गया, which is equal to half m v square by m. This will be equal to half. Now mv क्या होता है? This mass into velocity. This is the linear momentum. So this is the linear momentum of any body. ठीक है ना. If a body of mass m is moving with a velocity v, then इसका momentum हो जाएगा p. So that is written by p. तो p square by m हो गया. काइनेटिक एनर्जी है अगर हम लिखते हैं इसको, मान लीजिए दिस इज इक्वल टू लेट अस से k e. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी को अगर मैंने यहाँ पे के ई लिखा हुआ है, सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. और इट इम्प्लाइज दैट अगर इसको हम काइनेटिक एनर्जी को हम लेट से के लिख लेते हैं, अगर ऐसे कर लेते हैं, इट इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk. एंड वी कैन ऑल्सो राइट दैट द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is equal to 2mk. ठीक है. तो दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विच कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, और यू कैन से दिस लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 times of
mass into the kinetic energy. So and potential energy आपको पता है that is equal to m into g into h, where h is the height of an object above the surface of the earth. So these are the different forms of energy which we normally encounter, and an object normally possess these forms of energy within it. And one more thing, एनर्जी के से अगर हम बात करते हैं, देन वी कैन ऑल्सो जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि दैट इज द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व. Is conserved. It can change from one form into another. From one the total energy of an isolated system is conserved. It can change from one form into another. ठीक है, किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है वो आपका कंजर्व्ड होता है. ठीक है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर. ठीक है ना. So this is all I just wanted to discuss in this session. This was an introductory session in which I just wanted to give you a brief insight into the basic definitions of work, power and energy. So in the next session we will be discussing about these three terms in detail. So thank you very much for joining, and have a nice day.